हेलो माय डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू IFAS। दिस इज महेश। तो आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए एक सुंदर क्वेश्चन लेकर आया हूं। इस क्वेश्चन को डिस्कस करने से पहले आप लोग एक काम करना, इस क्वेश्चन को पहले खुद ट्राई करना। अगर नहीं आया तो फिर इस वीडियो को देखना और फिर आप देख लेना कि कैसे इस क्वेश्चन को अप्रोच किया जा सकता है। ठीक है, मुझे क्वेश्चन बहुत अच्छा लगा, आप लोगों को भी अच्छा लगेगा। ठीक है, चलिए। सो क्वेश्चन क्या है एक बार रीड कर लेते हैं कि क्या कह रहा है क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है कि लेट p बी अ फंक्शन फ्रॉम r to r is a continuous function and p of x is greater than 0 for all x belongs to r. ठीक है, and y be a twice differentiable function on r satisfying this differential equation. And suppose that there exist two real numbers a b such that a less than b and y of a equal to y of b equal to 0. Then what can you say about this function y? क्या y trivial solution होना चाहिए, क्या y non trivial solution होगा, or that can changes its sign in the interval ab, or y will be less than 0 for all x belongs to the interval ab, या फिर y should be greater than 0 for all x belongs to the interval ab. इसके बारे में थोड़ा डिस्कशन करना है। ठीक है, सो इस क्वेश्चन को हम वी विल ट्राई टू प्रूव दैट दिस सॉल्यूशन मस्ट बी अ ट्रिवियल सॉल्यूशन। क्या दिया है कि एक p फंक्शन है जो कि कंटिन्यूअस फंक्शन एंड टेकिंग ग्रेटर देन 0 वैल्यूज फॉर ऑल x, एंड एक y फंक्शन है जो कि इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, और वो एक कंडीशन भी सेटिस्फाई कर रहा है कि y ऑफ a इक्वल टू y ऑफ b इक्वल टू 0। ठीक है, वी विल ट्राई टू प्रूव दैट दिस सॉल्यूशन मस्ट बी अ ट्रिवियल सॉल्यूशन। कैसे, देखिए जरा। Suppose that we will assume that suppose y of x is non-trivial solution. Suppose it is non-trivial solution. अब y तो non-trivial solution है, so from this differential equation what I can write? ठीक है, so therefore we have what we have y double dash plus p of x into y dash minus y is equal to 0. This is what we have. अब यहां से मैं p of x लिख सकता हूं, so from this I can write p of x is equal to y minus y double dash upon y dash. ये मेरा p of x फंक्शन बना। अब देखिए, now given that p of x is greater than 0 for all x, right? Now given that what they have given, now given that p of x is greater than 0 for all x, right? P of x is greater than 0 for all x. Therefore, what should happen? Therefore, as p of x is equal to y minus y double dash of upon y dash, this implies that y minus y dash या तो ये दोनों न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, या फिर दोनों लेस देन 0 होना चाहिए। Therefore, y minus y double dash is greater than 0 and y dash is greater than 0 for every x is greater than 0, or y minus y double dash is less than 0 and y dash is less than 0 for each x, right? For each x, यानी कि for each x यानी कि क्या होना चाहिए? This implies that y dash of x कभी भी 0 नहीं हो सकता, या तो greater than 0 या तो less than 0, right? Therefore y dash of x is greater than 0 or y dash of x is less than 0 for every x. ऐसा ही होना चाहिए for every x, ऐसा होना चाहिए। लेकिन but given that y of a is equal to y of b is equal to 0 दिया है, राइट? अब y मेरा फंक्शन कैसा है? y is a solution of the differential equation which is of second order, so यानी कि y मेरा continuous function होगा। Now as y is a solution
y is a solution of differential equation implies that y is differentiable, y is differentiable, y is differentiable on open interval AB, right? I am trying to use the Rolle's theorem. Now y is differentiable function on open interval AB. Y is continuous, y is continuous, y is continuous on closed interval AB. y differentiable है, y continuous है on closed interval AB also, and y of A equal to y of B, y of A equal to y of B. This implies that by Rolle's theorem, what should happen? By Rolle's theorem, y dash of x naught must be equal to 0 for some x naught, belongs to the interval AB, right? So, and we know that, and we got that, what we got? Y dash of x is either greater than 0 or less than 0, and we got that y dash of x is greater than 0 for every greater than 0, or y dash of x is less than 0 for every x, therefore ये दो स्टेटमेंट एक दूसरे को कॉन्ट्रेडिक्ट कर रहे हैं. इसका मतलब क्या हुआ? हमें एक कॉन्ट्रेडिक्शन मिल गया. therefore we get a contradiction, right? therefore y must be a trivial solution. y कैसा होना चाहिए solution? y must be a trivial solution, right? so we have proved that y must be a trivial solution. इसका एक और रीजन है, मैं आपको हिंट देता हूं. आप लोग क्या करना कि मैक्सिमम मिनिमम थ्योरम यूज करने का ट्राई कीजिए, कोशिश कीजिए. यू कैन ऑल्सो शो दैट अगेन y must be a zero solution. ठीक है? सो आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छा लगा होगा. सो अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा. सो थैंक यू एवरीवन एंड हैप्पी लर्निंग.